बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम क्लास 5 का जनरल साइंस का की पॉइंट्स और एक्सरसाइज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चैप्टर 1। ड्यू टू क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स कैन बी आइडेंटिफाइड एंड देयर रिलेशनशिप्स कैन बी नोन। क्लासिफिकेशन की वजह से हम ऑर्गेनिज़म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनका जो रिलेशनशिप है वो भी मालूम कर सकते हैं। टू डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन का तारीफ़ यहाँ पर दिया गया है। जानदारों को डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, ये क्लासिफिकेशन होता है। द लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड किंगडम्स। The 5 kingdoms are Munira, Protista, Fungi and Plantae Animalia. Kingdom कितने हैं? 5 kingdoms हैं, Munira, Protista, Fungi, Plantae Animalia. Bacteria are example of Munira. Bacteria किस kingdom से ताल्लुक़ रखता है? Munira से। Yeast, Rhizopus, mushrooms, ये किस से ताल्लुक़ रखते हैं? Fungi से। All the plants are included in kingdom Plantae and animals in kingdom Animalia. The two groups of flowering plants are monocot and dicot plants. यकदालिया और दोदालिया। बेम्बू, बांस, शुगर केन, गन्ना, मेज़, मकई, वेट राइस, ये किस चीज़ के एग्जांपल है? मोनोकाट प्लांट्स हैं ये। बेम्बू, शुगर केन, मेज़, वीट राइस। और मैंगो, गुआवा, पम्पकिन, रोज़। गुआवा अमरूद, पम्पकिन कद्दू, रोज़ ये क्या है? ये डाइकॉट प्लांट्स है। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द सीड्स, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स। डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स की सीड्स, पत्तों और फ्लावर्स में फ़र्क होता है। एनिमल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, द वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स। एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है वर्टिब्रेट जिसमें रेड की हड्डी होती है, बैकबोन होता है। इनवर्टिब्रेट में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। द मेजर ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आर फिश, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। फिर वर्टिब्रेट्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, फिश, एम्फीबियन, रिप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में। सम मेजर ग्रुप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के ग्रुप्स ये हैं: स्पंजेस, वर्म्स, इंसेक्ट्स, मोलस्क एंड एकाइनोडर्म्स। The number of kinds of organisms found at any particular place is called biodiversity. Conservation of biodiversity is necessary because many organisms are now endangered. Cultivation, urbanization, and deforestation have destroyed the habitats of organisms. By conserving biodiversity, the organism can be saved from extinction. Which one of the following is the food of an aquatic bird? Aquatic bird में क्या होगा? ये वेब्ड फीट होगा, जैसा कि डक। द कैट बिलोंग टू विच ग्रुप? ये मैमल से बिलोंग करता है। अ फिश रिस्पायर थ्रू विच ऑर्गन? गिल्स के जरिए। मैनी फिश हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, शार्क्स में हैव अप टू 7 गिल्स। ज़्यादातर फिश में 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, 4 जोड़े होते हैं गिल्स के, और शार्क में 7 गिल्स तक हो सकते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कार्टिलेजन इन अ ग्राम सीड? ग्राम सीड में कितने कार्टिलेजन हो सकते हैं? 2। और मेज़ में 1 है क्योंकि ये मोनोकॉट प्लांट है। आउट ऑफ दीज विच ग्रुप इज़ फाउंड ओनली इन ओशन? ओनली इन ओशन इकाइनोडर्म्स है, और इसके एग्जांपल है स्टारफिश, सी एनीमोन, ब्रिटल स्टार एट्सेट्रा। चैप्टर 2। ऑल दोज टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की 3 बड़े ग्रुप्स हैं: वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई। वायरसेस आर वेरी टाइनी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, ये बीमारी पैदा करने वाले बहुत छोटे ज़र्रात है वायरस। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। बैक्टीरिया ये सिंगल सेल होते हैं और हर किस्म के माहौल में पाए जाते हैं। फंजाई आर सिंपल यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फंजाई ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। Some microorganisms do decomposition. They break down the complex matter of dead bodies into simple components. The 5 major sources of the transmission of infection diseases are air, water, animals, food, and direct contact. Major sources of transmission कितने हैं? 5.
Many microorganisms are used to make medicines. In order to prevent infection, we should keep ourselves neat, clean, and get vaccinated at proper time. Food items of daily use, yogurt and bread are prepared by using microorganisms. Mushrooms belong to which group of microorganism? और इस तरह yeast, molds ये किससे ताल्लुक़ रखते हैं? फंजाई से. What is the cause of the flu disease? Flu disease का काज है एक वायरस और इसकी 3 अक़साम है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. पेनिसिलियम एज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ग्रुप? ये इसको माइसेटस फंजाई से ताल्लुक़ रखता है और इसकी 350 से ज़्यादा स्पीशीज़ पाए जाते हैं. द फूड इज कंटेमिनेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और which one of the following is not a microorganism? Ant is not a microorganism. बैक्टीरिया और वायरस और प्रोटोजोआ ये सिंगल सेल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म है. Chapter 3. The 4 parts of flower are sepals, petals, stamens, carpel. The transfer of pollen grains from anther to the stigma is called pollination. Pollination की कितनी किस्में हैं? 2. Self pollination, cross pollination. Self pollination होता है जो एक ही पौधे के अंदर होता है और क्रॉस पॉलिनेशन 2 पौधों के दरमियान होता है. Reproduction is the process by which organisms produce new organisms of their own kind for the continuation of their generation. In asexual reproduction, only one parent produces new organism of its own kind. Sex cells are not involved in it. Layering, stem cutting, stem tuber are the ways of asexual reproduction in plant. Asexual reproduction के कितने ये अक़साम है? लेयरिंग है, स्टेम है, स्टेम कटिंग है, स्टेम ट्यूबर वगैरह है. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. जाइगोट डिवॉल्व्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स एम्ब्रियो. जाइगोट से क्या चीज़ बनता है? एम्ब्रियो. ओयूल फॉर्म सीड्स. सीड किस चीज़ से बनता है? ओयूल से. ये आपने याद रखना है. द ओवरी रेफरेंस टू फॉर्म फ्रूट. और फ्रूट किस चीज़ से बनता है? ओवरी से. सीड ओयूल से बनता है और फ्रूट ओवरी से बनता है. मेज इज मोनोकाट प्लांट. इट्स सीड हैज ओनली वन कार्टिलेडन. द मेज सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो. द ग्राम सीड ये डाइकॉट है. फॉर सीड germination the environmental conditions are water, air and suitable temperature. The given figure is a dicot seed. Which statement is correct about it? Cotyledon stores food for the embryo. ये statement correct है. In the given picture of a flower, which are the female reproductive parts of the flower? तो female reproductive parts of the flower ये इस पिक्चर में आपने खुद ढूंढने हैं. The gram seed is covered by which structure? Seed coat. Gram seed is covered by which structure? तो इसका seed coat होता है. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज पेस्टल. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को पेस्टल कहा जाता है. विच इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स. और ये 3 पार्ट्स से बना होता है. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है. विच कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन. तो इसके लिए वाटर, टेम्परेचर और एयर ज़रूरी है. और विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज मस्ट फॉर पेपिया. तो इसके लिए है पपीता एक, और मेज, रोज़ इस तरह इसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है. मेज, रोज़. और सेल पॉलिनेशन होता है पी, कॉटन और टोमेटो में. चैप्टर 4. एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट विच इज़ हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड पोल्यूशन. द 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन. और इस तरह एक और भी है, नॉइज पोल्यूशन. The main causes of air pollution are the poisonous substances present in the smoke which is emitted by vehicles on the roads and factories. The polluted water of sewage, waste substances of factories, insecticides, fertilizers, and leaking oil are the main causes of water pollution. Garbage from home, fertilizers, waste, spray of chemical substances, etc. are the main sources of land pollution. The aquatic animals die owing to water pollution. Smoke causes डिजीज़ ऑफ लंग्स, थ्रोट, स्किन एंड आइज. स्मोक की वजह से कौन सी बीमारियाँ होती है? लंग्स, थ्रोट, स्किन और आइज की. द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग ओइंग टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ग्रीन हाउस गैसेज. ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से पैदा होती है? विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल. इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. ड्यू टू दिस द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज चेंजिंग. Such matters which become part of the soil after broken down by natural processes into simple substances are called बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. जो ब्रोकन डाउन होते हैं नेचुरल प्रोसेस के जरिए. द मैटर दैट डू नॉट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय नेचुरल प्रोसेसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. टू रिड्यूस पोल्यूशन कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स 4R प्रिंसिपल इज यूज्ड. 4R प्रिंसिपल ये है
रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह से कौन सी बीमारी होती है, लंग कैंसर। और इस तरह डायरी, टाइफाइड, कॉलरा, ये गंदे पानी की वजह से होता है। द जर्म्स प्रेजेंट इन इट कॉज टाइफाइड, सीवरेज वाटर। विच वन ऑफ द दीज इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये पीडर्स, पेपर, लीव्स ऑफ प्लांट्स, ये क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल है। और पूरी 3 बैग तीली, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है, मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसेज है। और इस तरह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कॉजेज मोस्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन, ये बर्निंग ऑफ रबड़ से ज़्यादा पोल्यूशन पैदा होता है। चैप्टर 5, a material does not change into a new material having different properties due to physical change, physical change नया मटेरियल नहीं बन जाता। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच सॉलिड becomes liquid on absorption of heat is called melting, melting। The process during which heat is released from the liquid changing it into solid is called freezing। On heating, the change of liquid into gas is called boiling। The change of water into vapor is called evaporation, evaporation अमली तबखीर। The change of gas into liquid is called condensation, जब गैस यानी वेफर लिक्विड में बदल जाए तो कंडेंसेशन होता है। When a solid or liquid mixes with other liquid uniformly forming a mixture, it is called a solute। The minor component which is dissolved in a solution is called solute। मुनहल क्या होता है, whereas the component which dissolves is called a solvent। solvent मुहल्लिल जो हल करता है। A dilute solution is one that has a relatively small amount of dissolved solute। dilute solution वो होता है जिसमें solute कम होता है। A concentrated solution वो होता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्यूट होता है। द चेंज दैट अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ड्यू टू एक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज कॉल्ड रस्टिंग। रस्टिंग को यहाँ पर डिफाइन किया है, द चेंज दैट अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, ये सरफेस ऑफ आयरन पर होता है ऑक्सीजन और वाटर की वजह से। When a material combines with another one to form new material having new properties is called chemical change। chemical change में नया मटेरियल बन जाता है। द चेंज ऑफ मिल्क एंड टू यूगर्ट इज केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें एक नया चीज़ बन जाता है। वाई अ पर्सन पेंटेड हिज आयरन गेट, तो ये 2 मकसद, टू सेव फ्राम रस्टिंग एंड टू मेक इट ब्यूटीफुल। तो इसमें 1 आउट ऑफ दिस विच आंसर इज मोस्ट सूटेबल, 1 and 3 इज द मोस्ट सूटेबल। विच फैक्टर विल नॉट इफेक्ट द डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, तो ये जो 3 है ये इफेक्ट करता है, और टू एड सॉल्ट इन वाटर ये कोई इफेक्ट नहीं करता। Which one is not a chemical change? Making paperboard is not a chemical change. Which type of change is A2N metal expand on heating? ये physical change। Chapter 6, light is a form of energy which enables us to see objects around us। We can see across transparent object। Faint image is seen across a translucent object। Translucent object कौन सा शबीह बनाएगा, ये faint image, मध्यम तस्वीर बनाएगा। Shadow is made behind opaque objects as light cannot pass through them। Shadow कहाँ पर बनता है, behind opaque object, क्योंकि इससे लाइट पास नहीं हो सकती। Light travels in a straight line। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। More light is reflected from a shining surface। Sound is produced by a vibrating body। Sound can pass through air, water and solid object। The speed of sound in air is less than in liquids and solids। The intensity of sound decreases with increase of distance from its source। Harsh and irritant sounds or unpleasant sounds, such sounds are called noise। Noise is very harmful to human health, therefore reducing noise is necessary। How does light travel air? How does light travel in air? Along a straight line। Which object does reflect maximum light? Mirror। Speed of sound is maximum in a metal wire because it is speed of sound is maximum in solid, फिर liquid में होता है और फिर गैस। तो गैस में साउंड स्पीड ऑफ साउंड कम से कम होता है। Which of the following sounds is called noise? और वैक्यूम में साउंड नहीं होता। तो which of the following sounds is called noise? तो प्रेशर हॉर्न ये क्या है, नॉइज है। When water comes in the way of sound traveling through air, जब वाटर आ जाता है, एयर क्या है, एयर गैस है और वाटर लिक्विड है, और लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड तेज़ होता है, साउंड विल बिकम फास्ट। चैप्टर 7,
Charge is a basic property of matter. There are two kinds of charge, positive charge and negative charge. Similar charges repel each other and opposite charges attract each other. Similar charges मतलब जब एक जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रेफेल करेंगे और अपोजिट पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा. द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. The path of current flow is known as electric circuit. The bulb, cell and switch connected in electric circuit are known as components of circuit. Turning on a switch allows current to flow in the circuit. It is called complete or closed circuit. Complete closed circuit कौन होता है जिसमें करंट चलता है. Turning off the switch stops current flow in the circuit. It is called open circuit and complete circuit. The materials which allow the flow of electric current through them are called conductors. The materials which do not allow the flow of current through them are called insulators. A fuse is inserted in an electric circuit for safety purpose. Magnet is a piece of metal which attracts objects made of iron, nickel and cobalt. The materials which are attracted by a magnet are called magnetic materials. A freely suspended magnet always stays in north-south direction. फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा. द एंड्स ऑफ अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल्स. सिमिलर मैग्नेटिक फोर्स रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट फोर्स अट्रैक्ट ईच अदर. द अर्थ बिहेव्स एज अ ह्यूज बार मैग्नेट. अर्थ क्या है? ये ह्यूज बार मैग्नेट है. द मैग्नेटिक कॉम्पास इज यूज टू फाइंड डायरेक्शंस एक्यूरेटली. एक्यूरेट डायरेक्शन के लिए हम कंपास इस्तेमाल करते हैं. इफ करंट इज पास थ्रू अ कॉइल वाउंड अराउंड एन आयरन रॉड, it behaves as a magnet. It is known as electromagnet. जब हम किसी आयरन रॉड में करंट पैदा करते हैं मैग्नेट के ज़रिए, तो ये क्या होता है? करंट के ज़रिए जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैदा होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट. दिस इज़ टेम्पररी मैग्नेट. ये और ये टेम्पररी मैग्नेट होता है. The flow of current in an electric circuit is controlled by switch. Current can easily pass through steel paper clip. How many poles are there in offering a shaped magnet? 2. A freely suspended bar magnet always stays along north-south direction. Which one is the true statement? North pole repels north pole. Chapter 8. There are three parts of the earth on the basis of its structure. The outer layer is known as crust. It consists of sea and solid rock. Outer layer क्या होता है? ये crust होता है. Middle layer mantle होता है. Consists of extremely hard thick fluid. मेंटल किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? हार्ड थिक फ्लूइड पर. कोर इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ. सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ क्या है? ये कोर है. और मिडल लेयर मेंटल है और आउटर लेयर क्रस्ट है. इट इज़ द हॉटेस्ट एंड हेवीएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. कौन सा है? सेंट्रल पार्ट है. ओशंस, ग्लेशियर्स, रिवर्स, लेक्स, स्प्रिंग्स एंड अंडरग्राउंड वाटर आर सोर्सेज ऑफ वाटर. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल की कितनी अक़साम है? 3. सैंड, क्ले एंड सिल्ट. क्ले इज़ यूजफुल टू मेक pottery, sand for glass and silt is good for cultivation. क्ले किस चीज़ के लिए मुफीद है? पॉटरी, बर्तन बनाने के लिए. सैंड, ग्लास बनाने के लिए. और सिल्ट कल्टीवेशन या ज़राअत के लिए. द डिकेड मैटर इज कॉल्ड ह्यूमस. ह्यूमस किस चीज़ को कहा जाता है? डिकेड मैटर को. इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल. द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट. ये 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक होता है. और इनर लेयर को इनर मोस्ट जो लेयर है इनर कोर और मेंटल मोस्टली सॉलिड बल्क को होता है. व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ द सॉइल? सैंड, सिल्ट एंड क्ले. विच टाइप ऑफ सॉइल इज गुड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट? सिल्टी. इसको सैंडी लोम भी कहा जाता है. व्हाट इज द रोल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल मेकिंग सॉइल सॉफ्ट एंड एरी? द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ इज अबाउट 1%. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन द नेचुरल मैन्योर? मिनरल्स. Chapter 9. Space is the unlimited expanse in which all heavenly bodies such as moon, earth, sun, stars and galaxies are located. Space क्या है? NASA is an American agency responsible for space exploration and aviation. Satellite is an object which revolves around another big object due to its gravity. Artificial satellites are the objects put into orbits around the earth by human beings. Geostationary satellites keep pace with the earth and complete one orbit in one day. Satellites are used for every useful purposes such as communication, navigation, TV display and the world survey, weather monitoring and spring. International Space Station. International Space Station क्या है? ये ह्यूमन मेड लेबॉर्ट्री है ऑर्बिटिंग इन स्पेस अराउंड द अर्थ.
Countless shining lights seen at night on the sky are stars. How long does it take for a geostationary satellite to complete one orbit? 1 day. First man to step on the moon was Neil Armstrong and Edwin Buzz Aldrin. ये दूसरा था. The system locate the position of an object on Earth's surface as GPS, Global Positioning System. The first artificial satellite was sent into space in October 4, 1957, Sputnik 1 by Soviet Union. Chapter 10 Making technical model is a useful skill. Spirit level किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? To check the level of horizontal surface के लिए spirit level इस्तेमाल. Mason use a plumb line to keep a wall vertically straight. Mason क्या इस्तेमाल करता है? Plumb line. It is essential to know the correct operating method and various precautions for assembling and operating machines and technical tools. The knowledge of first aid and natural resources management practices can save substantial financial and life losses. Which we check the horizontal surface level through spirit level. What does a mason use to keep a wall vertical? Plumb line. Saline water is used for cleaning wounds. Sterile gas is used as bandage on wound. The emergency phone call number is 1122. तो ये था आज का जनरल साइंस का क्लास. उम्मीद करता हूँ इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे. मिलती है अगली वीडियो में अगले क्लास के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. दुआ में याद रखिएगा. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.